नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। अमेरिका के 3 शहरों की अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को राहुल गांधी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में भी बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। दरअसल राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को ही समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वो वैज्ञानिक को विज्ञान के बारे में और इतिहासकार को इतिहास के बारे में भी समझा सकते हैं। And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? उन्होंने कहा कि हमने नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी उन सभी पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण था। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत में एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी बात की। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. People are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from the southernmost tip of India to Srinagar. And when we started, I thought, okay, देखेंगे क्या होता है. After 5 or 6 days, we realized that actually walking 4,000 kilometers is not an easy thing. And I had an old knee injury that started to act up. So I said, now I'm in real trouble because there's no choice. One has to walk and I'm having quite a lot of pain. And then quite a surprising thing happened. Which is I started noticing that after walking 25 kilometers is more than half a marathon. So after walking
2-3 weeks, every day 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all. I get up in the morning, 6 o'clock we used to start, and we used to end walking at about 7:38 in the evening, and I was like, this is very strange, I'm not feeling tired at all, what is this? And then I started asking people around that, भाई ये हो क्या रहा है, आपको थकान हो रही है? Everybody is saying to me, थकान तो नहीं हो रही. It's very strange, we're not feeling tired. So I started to think about it, and I realized that actually what was going on was that it was not us that was walking. It was India that was walking with us. Right? And the large mass of people who are coming, all religions, all communities, everybody, kids, they were creating an atmosphere of love and affection where nobody was feeling tired. Almost as if everybody was walking together. सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी. And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. वहीं इसके अलावा राहुल गांधी ने नई संसद को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि इसे बदलना नहीं चाहिए था. आज मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि दलित, सिख, ईसाई भी. उन्होंने आगे कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, बल्कि नफरत को प्यार से ही दूर किया जा सकता है. The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने संबोधन के बाद लोगों से सवालों के जवाब भी दिए और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की मीटिंग में ऐसा सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता है. Now they've asked me to answer your questions. See that few questions. That also would not happen in a BJP meeting. Yes. No questions there. Only answers. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका आए हुए हैं. वो यहां 3 शहरों का दौरा करेंगे. इससे पहले राहुल गांधी यूके की यात्रा पर भी गए थे. वहां पर जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी बयानबाजियां की थी, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था और सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की थी और संसद नहीं चलने दी थी. और अब एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेश दौरे से बवाल मचना तो तय है. फिलहाल इस खबर में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क. नमस्कार.